In this topic of conservation biogeography, we will be concluding this topic. We are living in interesting times. Interesting time, it is a call to an ancient proverb in which it says that may you live in a interesting times. So we are indeed living in interesting times. The information revolution, advances in molecular technology, and an evolving culture of international collaboration are generating enormous quantities of biogeographical data and new generations of sophisticated tools to uncover the hidden patterns of nature. हमारे पास इस कदर data मौजूद है due to the advances in every field of life that we can see the and we are able to uncover the hidden patterns of nature. किस तरह से फितरत काम करती है, we may be able to do that. हम ऐसा कर सकते हैं if we imply those tools rightly. All of this is taking place during an unparalleled period of environment change, which will result in resorting and readjusting of life on Earth, the magnitude of which has not been seen since the last mass extinction. And that's why we call it Anthropocene. हम जिस particular period of time में रह रहे हैं, उसमें हम species को इस तरह से change, environment को इस तरह से change कर रहे हैं कि तमाम का तमाम इन्वायरमेंट जो है वो उथल पुथल हो गया है और इसको और ऐसा जो एक्सटिंक्शन हुई है ऐसा लास्ट टाइम तब हुआ था जब मास एक्सटिंक्शन जारी थी और इसी वजह से इस एपक को इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हम एंथ्रोपोसीन कहते हैं. These changes will have consequences at every scale from local to global and will have lasting impacts on the future evolution of life on our small blue planet. So small blue planet, that is Earth, on which there is life. Certain lives have been extinct. There are no more species. और जैसे जैसे ये extinction rates बढ़ता जा रहा है, we are also changing the future picture of our Earth as well. The species that are extinct today will never be able to come again on this Earth again. The conservation biogeography cannot provide all the solutions to the problems of biodiversity loss. So, ये conservation biology ही ऐसा नहीं कर सकती. मुख्तलिफ अवामिल हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिन और मुख्तलिफ दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस मिल के बायोडाइवर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. The conservation biogeography can provide many of the tools and concepts to make scientifically informed choices about what and where to protect and to potential consequences of future environmental change, that is climate change, habitat loss and invasive species. So, conservation biogeography tells us कि हमने अपने वसाइल महदूद वसाइल का इस्तेमाल कहाँ पे करना है ताकि हम कम से कम species को गंवा सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा species को बचा सकें. The greatest challenge facing scientists may be the turning their concepts and prediction into practice, guidelines, protocols, tools and applications. Scientists research तो कर लेते हैं, लेकिन उस research को पाया तकमील तक तभी पहुंचाया जा सकेगा जब उससे मुतालिक tools, policies और guidelines, application, all of these things are implemented into the environment. एक साइंटिस्ट जो है वो किसी स्पीशी को बचाने का तरीक़ाकार बना लेता है, जब तक वो तरीक़ाकार माहौल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस तरीक़ाकार का कोई फ़ायदा नहीं है. सो इसके लिए सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट और सबसे बड़ी जो रुकावट हैं दे आर इन्फ्लुएंस कि वी आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिशियन एंड कन्विंस द स्केप्टिकल पब्लिक्स. हम आवाम जो कि तशकीक का शिकार है उसको नहीं समझा पा रहे या फिर ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपना असर व रसूख रखते हैं लेकिन वो हमारे साथ अपने जो उनके मिशन हैं जो वो हमारे मिशन से मुख्तलिफ हैं तो हम उनको अपना इस तरीके से असरअंदाज हों उनके ऊपर कि वो अपनी पॉलिसी को इस तरह बनाएं कि हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जो है उसको यकीनी बना सकें. Biodiversity needs to be fully integrated into the other sectors of environmental governance.
This will only occur when high quality biodiversity data are available to key decision makers in the form that they can actually use. अब जितने भी policy makers हैं, they don't have that quality of data and in that form which they can actually use. अगर हम किसी भी species का data ले आते हैं कि ये मादूमियत का शिकार है, क्या हमारे जो law makers, जो policy makers हैं, are they able to understand that? And if they are, is the data is in that shape in which they can use it? अगर वो इसको use कर सकें, then they can make some policies which can protect that particular species. So conservation biogeographer can contribute by providing improved frameworks and concepts that give the meaning and structure to biodiversity information and by producing models and visualization tools that are of genuine practical importance. अब biogeographer क्या कर सकते हैं? The conservation biogeographer ये कर सकते हैं कि जितना भी डाटा मौजूद है उसको इस तरह के मानियों मुतालिब और स्ट्रक्चर फ्राहम करें जिससे कि वो उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके और ऐसे मॉडल बनाएं जिसके ज़रिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ तश्कील दी जा सकें जो कि मुस्तकबिल में स्पीशी के बचाव में मददगार हों.